when we were in the process of going diamond. And a part of that Silver Bullet program, we launched that Silver Bullet program to finalize our diamond ship. And when we went diamond, 24 brand new silver producers walked across that stage with us when we went diamond. Carl, I want to translate you along with, and you will have to wait till I translate. तो कार्ल ने अभी एक सिल्वर बुलेट की पोएम सुनाई और उन्होंने कहा कि मैं इतना ताकतवर महसूस करता हूं आज जितनी एक सिल्वर बुलेट महसूस करती है जो सीधा पिस्तौल से निकल के अपने निशाने पे जाके लग जाती है, और मैं इतना ताकतवर आज से पहले कभी मैंने महसूस नहीं किया। और ये पोएम मैंने तब लिखी थी जब मैं डायमंड जा रहा था, और मैं ये पोएम बोला करता था अपने ग्रुप को मोटिवेट करने के लिए जब मैं डायमंड जा रहा था, और मैं सबको कहता था कि अगर हम बुलेट की तरह फोकस हो जाएंगे और सीधा अपने निशाने की तरफ पूरी तेजी से बढ़ेंगे तो हम कमाल कर देंगे। और मैं बहुत ही तेजी से इस पोएम को लिखने के बाद सिर्फ 2 साल के अंदर डायमंड गया, और जिस दिन मैं डायमंड गया तो उस दिन मेरे साथ 24 नए सिल्वर भी स्टेज पे गए थे। Yes, Carl, you can continue. Now I want to tell you a little bit about my relationship with Anil and Bindu. अब मैं आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में बताता हूँ अनिल और बिंदु के साथ। If you didn't know me, and if you asked me who are some of my very best friends in the entire world, अगर आप मुझे नहीं जानते और अगर आप मेरे को ये पूछोगे कि मेरे सबसे करीबी दोस्त पूरी दुनिया में कौन है, my answer would immediately be Anil and Bindu Narang in India. तो मेरा आंसर होगा अनिल और बिंदु नारंग इंडिया में। And I don't know how it happened. I don't know why it happened. I just know it really happened. मैं ये नहीं जानता ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ ऐसा हुआ। Many times a man grows to become old and he has not very many really true fabulous friends. कई बार आदमी ओल्ड हो जाता है लेकिन उसके बहुत जबरदस्त दोस्त कई बार नहीं हो सकते। And I'm not sure why we did it or how we did it, but our very best friends live clear on the other side of the world from us, and they are Anil and Bindu Narang. लेकिन ये जैसे भी हुआ, लेकिन मेरे जो सबसे करीबी दोस्त हैं वो दुनिया के दूसरे हिस्से में रहते हैं, इनका नाम अनिल और बिंदु नारंग है। And I have been to India 35 times. मैं 35 बार इंडिया आया हूँ। And every time I went, when I was ready to leave to come back home, I would tell them, I will be back. और जब भी मैं जाता था और जब मेरी वापस जाने की बारी होती थी, मैं इनको कहता था मैं वापस आऊंगा। And I've talked to people in India about why we had so very much success in India. मैं लोगों को बताता हूं कि मेरी इंडिया में इतनी बड़ी कामयाबी का क्या कारण है। And here's what they told me. लोग मुझे ये कहते हैं। They said, Carl, you told us you would come back and you kept your word. और इंडिया के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो मेरे को हमेशा यही कहते हैं, कार्ल आपने कहा था मैं वापस आऊंगा और आपने अपने वर्ड रखे और आप वापस आए। You did what you said you would do. तुमने वो कहा जो वो किया। And I know that there are about 300 people on this call right now, and here's what I want to tell each and every one of you. मेरे को पता है यहाँ पे करीब 300 लोग हैं इस कॉल पे, और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ। No matter what else happens,
You must keep your word. You must do what you say you will do. तुम्हें कुछ भी हो जाए लेकिन तुम हमेशा अपना वर्ड पूरा करो, जो भी कहो वचन अपने पूरे करो, और जो कहो तो वो करो फिर. People with goals succeed. जिनके गोल होते हैं कामयाब होते हैं. And people without goals do not succeed. जिनके गोल नहीं होते वो कामयाब नहीं होते. I always take the first step. मैं हमेशा पहला कदम उठाता हूँ. No more, no less, just the first step. ज्यादा नहीं, कम नहीं, पहला कदम. I stop thinking about my regrets of the past, my fears of the past, and I stop thinking about my fears of the future, and I focus on now. मैं अपने पिछले टाइम में क्या हुआ, अपने पास्ट में क्या हुआ, उसके कोई डर, उसके कोई रिग्रेट, उनको भुला देता हूँ. आगे क्या होगा उसको भी भुला देता हूँ, और मैं प्रेजेंट जो अब हो रहा है उस पे फोकस करता हूँ. Now is how. अभी जो हो रहा है वही सब है. You must discover the power of now. तुम्हें अभी का जो क्षण है उसकी ताकत को समझना होगा. You must discover the power of the present moment. अभी जो ये लम्हा जो जा रहा है इसकी ताकत को समझना होगा. Nothing else really counts. और कुछ काउंट नहीं करता. The regrets of the past or the fear of the future, they count nothing. पीछे क्या हुआ उसका अफसोस और आगे क्या होने वाला है उसकी इच्छा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. The only thing that counts is now and what you're doing right now. एक ही चीज है जो काउंट करती है, वो है अब जो हो रहा है और अभी आप क्या कर रहे हो. I have learned in my 82 years on living on this earth that life is a journey. मेरे जो 82 इयर्स इस धरती के ऊपर बीते हैं उसमें मैंने ये सीखा है कि लाइफ एक यात्रा है. I've also learned that success is a journey. और मैंने ये भी सीखा है कि कामयाबी भी एक जर्नी है. Success is not a destination. सक्सेस एक डेस्टिनेशन नहीं है. You must enjoy the journey. यात्रा को एंजॉय करना चाहिए. If you want to know what my true beliefs are, अगर आप ये जानना चाहते हो कि मैं किन चीजों पे विश्वास करता हूँ, take a look at my actions. मेरे एक्शन को देखो. I'm almost 82 years old. मैं 82 साल का होने वाला हूँ. And I get up every morning and I work every day. मैं हर रोज सुबह उठता हूँ और हर रोज काम करता हूँ. And I always have a list of goals that I want to accomplish that day. और मेरे पास हमेशा एक लिस्ट होती है गोल की जो मैं हर रोज अचीव करना चाहता हूँ. And I always prioritize my goals. और मैं हमेशा अपने गोल की प्रायोरिटी बनाता हूँ कि पहले कौन सा मेरे को इम्पोर्टेंट है और दूसरा कौन सा. And then I set out to achieve those goals for each day. और फिर मैं चल पड़ता हूँ, निकलता हूँ अपने उन गोल को अचीव करने के लिए हर रोज. Now there's a little secret that I want to tell you about. एक रहस्य मैं आपको बताना चाहता हूँ. I learned practically everything I know, I learned from people in this business. प्रैक्टिकली जितना भी मैं दुनिया के बारे में जानता हूँ सब कुछ मैंने सीखा है लोगों से जो इस बिजनेस में हैं. And even though we are upline to Anil and Bindu, हालांकि हम अपलाइन हैं अनिल एंड बिंदु के, we have learned so very, very much from them. बहुत कुछ हमने उनसे भी सीखा है.
And I have always been absolutely amazed at how much they are dedicated to the people in their organization. और मुझे बहुत हैरानी होती है कि उनकी डेडिकेशन कितनी है उनके लोगों की तरफ जो उनकी टीम में है. When Anil and Bindu talk to me, here's what they talk about. वो जब मेरे से बात करते हैं तो ये बात करते हैं. They talk about you. आपके बारे में बात करते हैं. They talk about you all the time. They talk about you and how you're progressing in the business and how much you believe in this business. आपके बारे में बात करते हैं और आप किस तरह से ग्रो कर रहे हो इस बिजनेस में उसके बारे में बात करते हैं और आपका विश्वास कितना है इस बिजनेस में उसके बारे में बात करते हैं. And so I just feel so very, very blessed that Anil and Bindu are my friends and friends with my wife, Marcia. और मैं बहुत ब्लेस्ड फील करता हूं कि अनिल और बिंदु हमारे दोस्त हैं और मेरे और मार्शा के दोस्त हैं. So Anil, you told the story about when we had the accident. हाँ, मैंने वो स्टोरी सुनाई जब एक्सीडेंट हुआ था. यस कार्ल. And I remember another time when I was a passenger in the front seat of a car in New Delhi. मैं एक और कहानी मेरे को याद है जब मैं आगे बैठा था दिल्ली में हम जा रहे थे. And that car caught on fire. और कार को आग लग गई थी आगे बोनेट में. And I'm sitting there in the front seat and flames are coming up out of the engine right in front of my eyes. और मैं आगे बैठा हूँ और पूरे लपटें आग की निकल रही है मेरे सामने गाड़ी में से. And all of a sudden, people started coming from everywhere, from all directions, running toward our car with buckets of water and buckets of sand and dumping it on the car to put out the fire. और बहुत ही थोड़े समय में चारों तरफ से लोग भाग के आए और पानी और रेता लेके कार को आग बुझाने लगे. And it wasn't even the fire department. और फायर डिपार्टमेंट के तो आने की बात भी नहीं हुई. It was just people. लोग थे. And I said, where did all these people come from? और मैंने पूछा ये सारे लोग एकदम कहाँ से आ गए. And the answer they gave me was, these are Indian people. और जवाब ये था कि ये हिंदुस्तानी लोग हैं. And they see cars catch on fire every now and then. कारों को तो आग लगती रहती है कभी ना कभी. I had never seen a car catch on fire. लेकिन मैंने कभी देखी नहीं थी कार को आग लगती तब तक. So that was another amazing story. वो भी बहुत एक कमाल की कहानी थी. I have been to how many cities would you guess that I have been to in India? क्या आप अंदाजा लगा सकते हो मैं इंडिया में कितने शहरों में गया हूँ? I have been to 105 cities in India. मैं 105 शहरों में गया हूँ इंडिया में. I suspect that might be more than even you who live in India. More cities. I've been to more cities in India than you have in India. मेरे को तो ये शक होता है कि मैं आपसे भी कहीं ज्यादा शहरों में गया हूँ इंडिया में. Except I know that Anil and Bindu have been to more cities than me. सिर्फ मेरे को ये पता है अनिल और बिंदु ने मेरे से ज्यादा शहर घूमे. Is that true, Anil? I'm not sure, Carl. Maybe you have traveled more still. It is possible. Maybe quits. Maybe same. But no. I've even been all over Kerala. पूरे केरला में गया हूँ मैं. And I've been to the Golden Temple. Yeah, मैं Golden Temple भी गया हूँ. And I've been to
Bangalore and Mangalore and Coimbatore. Yes, translation not needed. And Taj Mahal and everywhere, Jaipur and Jodhpur and everywhere. And Sangrur. And Sangrur and Amritsar and Hisar and Ludhiana. And now I want to ask you a question. अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Did they ever build a road to Bangalore? What did you ask, Carl? Did they ever build a road to Bangalore? क्या बेंगलोर के लिए कोई सड़क बनी है? Because when we traveled to Bangalore, frequently the road stopped, but the car had to keep going until it could find another road. या उस टाइम पे जब हम जाते थे कई बार रास्ते में सड़क होती नहीं थी और लेकिन चलते रहना पड़ता था. सड़कें बहुत ही खराब थी. Now, Carl, the roads are much better in India. Yes. Much better now. Do you remember those days in Yeah, Anil? yeah, I remember when we went to Dehradun and there was no road, and so we had to go from the water, inside the water. Oh yeah, I meant Dehradun instead of Bangalore. I meant Dehradun. Yes, Chandigarh to Dehradun road was very bad. Yeah, that's right. Even once we had to go into the water to reach. And one time, do you remember, Carl, when you went on a car on the boats? Practically, we took our car. You were sitting in the car. It was Maruti Omni van, the small van. And we went over the boats to cross a river. Yes, I remember that. Yes. Amazing. Carl, you have a very sharp memory. Yes. Carl, how many supplements do you take? I think about 22. 22. 22, okay. Yeah, that's amazing. So, Carl, that's amazing. Today, listening to you was unbelievable. And so, Carl, with this Corona situation, what happened to your Amway business in America? Our Amway business is still growing, and our volume now, because of the coronavirus, our volume now is higher than ever. Yeah. अब कोरोना की वजह से हमारे वॉल्यूम जो है बहुत ही ज्यादा बढ़ गए हैं, पहले से कहीं ज्यादा हैं. Because in America now the stores are closed, and so if you want to buy something, you buy it and have it shipped to your home. And of course, that's the business that Amway is in. Yeah, अभी जो है स्टोर तो बंद है, लेकिन आप ऑर्डर करते हो और वो प्रोडक्ट जो है आपके घर में आ जाते हैं. और एमवे तो ऐसा ही बिजनेस करना चाहता है कि प्रोडक्ट घर में भेजे जाएं, होम डिलीवरी ऑर्डर्स. And we order it today and it will arrive tomorrow. आज हम ऑर्डर करते हैं, कल आ जाता है. डिलीवरी बहुत ही तेज है वहां पे. And that is eventually that's what will happen in India. और यही होगा इंडिया में भी आगे आगे चल के कभी. I know that they deliver in India now, but I know that the deliveries might be somewhat slower, but it will get faster. Yeah, Carl, the deliveries normally are good, but these days, there are, because of government situation, lockdown, etc., deliveries are really bad, but they are improving slowly. तो Carl कह रहे हैं कि आगे आगे delivery बहुत और improve हो जाएगी एमवे की. Definitely, Carl, that's happening. Well, yeah. So, Carl, how do you think about what impact Amway business has made overall on your and Marsha's life? And also tell us about Mara. Your granddaughter is doing so well. She's a top golfer, and she has her own brand of Blistex lip care products, which are selling in more than 50 countries already. Yes. My granddaughter is in her second year in high school, and she is an avid golfer. And
She's on the high school golf team, and she went into the golf competition for the entire state of Illinois, and she won first place. And she's only in her second year in high school, and she beat out the seniors. Oh, wow. And when we came to Chicago, Carl, we stayed in Carla's home. And that time Mara was, I think, 4 years. No, few months. Few months old. Less than a year. Less than a year old. Really? Yeah, that's amazing. Carl, there are some people are asking you question. Why did you start the MBA business? Yes, Pravinder is a founder platinum, and he has asked the question, why you started the MBA business? I was 53 years old when I started the Amway business. And I realized that if I kept on doing what I was doing, I was going to keep on getting what I was getting. And if I wanted something different, I was going to have to do something different. तो काल कहते हैं कि इनकी उम्र 53 इयर्स की हो गई थी और ये उस टाइम चार्टर्ड अकाउंटेंट और लायर की प्रैक्टिस कर रहे थे, तो ये इनको लगा कि जो मैं कर रहा हूँ अगर वो करता रहूँगा तो जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा, कुछ अलग मेरे को चाहिए था, तो मेरे को एमबीए बिजनेस से लगा कुछ अलग मिल सकता है, इसलिए मैंने एमबीए बिजनेस को ज्वाइन किया. Carl, how did you get so much committed so fast that you built it unbelievable? Like people by then, when you joined the business in America, the business was already more than 33 years old, and people were saying 34 years old business in America, and people were saying it's already saturated, and you built it so fast, the 4.5 years to diamond. The thing I realized is that this business will never saturate. It will never ever saturate. मेरे को ये समझ आया था कि ये कभी सैचुरेट हो नहीं सकता. And what happened to me was I got sponsored into the business, and everybody told me that it was a pyramid. मैंने जब स्पॉन्सर हुआ मैं इस बिजनेस में, तो सब लोग मेरे को कह रहे थे ये तो पिरामिड है. But when I passed up my sponsor, and when my pin level got higher than my sponsor's pin level, then I knew it wasn't a pyramid because I passed up my sponsor. और जब मैंने अपने स्पॉन्सर से बड़ा बिजनेस बना लिया, मेरा पिन बड़ा हो गया, तो मेरे को समझ आ गया कि ये पिरामिड तो हो ही नहीं सकता, मेरा पिन उससे बड़ा हो गया, इनकम भी बड़ी हो गई. And then I passed up my sponsor's sponsor. और फिर मैं अपने स्पॉन्सर के स्पॉन्सर से भी आगे निकल गया. Then I passed up my sponsor's sponsor's sponsor. फिर मैं उसके स्पॉन्सर से भी आगे निकल गया. And so when we became Executive Diamond, we passed up many people in our upline. और जब हम एग्जीक्यूटिव डायमंड बने, तो मैं बहुत सारे लोगों से आगे निकल गया. And we ended up making a lot more money than some people in our upline, even though they were above us in the upline. तो हम लोग अपने अपलाइन से ज्यादा पैसे बनाने लगे, चाहे वो हमारे ऊपर थे. And we focused on two things. We focused on building with personally sponsoring people, but we then always focused on helping the people we sponsored. We focused on helping them build their depth. हमने दो काम किए. हमने विड्थ बनाई पहले, लेकिन बाद में बहुत ज्यादा फोकस हमने किया जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया उनकी डेप्थ बनाने में, और बहुत तेजी से हमने डेप्थ बिल्ड की. So I don't know if that answers your question or not, but No, it was a great answer, Carl. They already understood. There are some more question. I will take one more question.
And Sahil Gupta is asking, sir, what do you think was your biggest skill that helped you achieve so much fast? What one skill was with you that helped you achieve so fast? I learned to become a good listener. मैंने सुनने की कला को समझा और मैं बहुत अच्छा लिसनर बना. And I learned the principle of feel, felt, found. I know how you feel. I felt the very same way, but let me tell you what I found. मैंने ये फील फेल्ट फाउंड के प्रिंसिपल को समझा. जब मुझे कोई बातें पूछता था तो मैं उनको ये कहता था, मैं समझ गया हूँ, आपको कैसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा ही लगता था, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ अब मेरे को क्या समझ में आया. It's amazing concept, Carl. So, Carl, that's great. Today, we are so fired up, and it has been a blessing. As you always said, every adversity has a seed of equal or greater opportunity. And, everywhere there is lockdown, but, we could connect with you and our team could see you. So we'll definitely like to have at least 1 or 2 more meetings with you so that our entire team can listen to you, because this is just a part of the team. And we already had this meeting. So then we'll specially organize more meetings, 1 or 2 as per your availability of time. Yes. I will be available. Oh, thank you so much, Thank Carl. you. And is Marsha not there today? Could we talk to her or maybe next time? Marcia, if we schedule it for later, but she likes to sleep in the morning. Oh, yeah. She's a late sleeper because she paid her dues. And so क्योंकि मार्शा बहुत लेट उठती है, वहाँ पे एक्चुअली बहुत सुबह है, तो मार्शा लेट उठती हैं क्योंकि वो अपने बिल सारे पहले ही पे कर चुकी हैं. मतलब ये एक मतलब कहावत ईडीएम की तरह यूज कर रहे हैं कि वो अपने बिल पे कर चुकी हैं, उनको चिंता नहीं है कोई, तो आराम से लेट उठती हैं. तो अगर हम इसको लेट प्लान करेंगे तो हम उसको मार्शा से बात कर सकते हैं. मतलब हमें प्लान करना पड़ेगा रात को 11 घोड़े बेच के सो या रात को 10 बजे प्लान करना होगा कभी. Wow. And yes, Carl, that's great. So it was very great listening to you. So, Carl, do you have anything to say, or we can try to wrap it up now? I'm not sure what to say here. Let me look at the, what about persistence? How about nothing in the world can take the place of persistence? दुनिया में कोई भी चीज persistence की जगह नहीं ले सकती. Talent will not. What did you say, Carl? Please come again. Talent will not take the place of persistence. Yeah, talent persistence की जगह नहीं ले पाएगा. Nothing is more common than unsuccessful men with talent. दुनिया में इससे ज्यादा कॉमन चीज हो ही नहीं सकती जितने ज्यादा लोग नाकामयाब हैं टैलेंट होते हुए भी. Genius will not take the place of persistence. बहुत अक्लमंदी जो है persistence की जगह नहीं ले सकती. Unrewarded genius is almost a proverb. ऐसे जीनियस जिनको कभी कामयाबी नहीं मिली, ये तो एक बहुत ही आम बात बन चुकी है, एक प्रोवर्ब की तरह, मुहावरे की तरह. Education alone will not take the place of persistence. पढ़ाई persistence की जगह नहीं ले पाएगी. The world is full of educated derelicts. दुनिया भरी पड़ी है पढ़े लिखे लोगों से जो फेल हो चुके हैं. Persistence and determination alone are omnipotent. लगातार काम करना और दृढ़ निश्चय होना, यही सिर्फ 2 चीजें हैं जो काम करती हैं. And there was a man by the name of Thomas Edison, and here's what he said. और एक इंसान जिनको आप जानते हो जिनका नाम थॉमस एडिसन है, उन्होंने ऐसा कहा. If we were all to do all that we're capable of doing,
we would astonish ourselves. अगर हम वो सारा कर लेंगे जिसकी हमारे में क्षमता है तो हम खुद को ही हैरान कर देंगे. And one of the things I want to ask you is, are you sponsoring people through this Zoom program? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप Zoom से स्पॉन्सर कर रहे हैं लोगों को? Yes, Carl, actually Zoom has started for everybody very recently. However, I have been using Zoom for my small groups for the last 2 years. And we have really not sponsored many people on Zoom because people were not using Zoom very frequently. It will happen now, actually. And it is happening now. But earlier, you know, sponsoring was happening as usual, but trainings were happening on this Zoom. But now things are changing and we are showing plans on Zoom also, and we are doing trainings on Zoom also. Everything is we are doing here on Zoom because we can bring many, many people here. Well, that's wonderful. बिल्कुल, बहुत जबरदस्त.